Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 5. Today we are going to start unit number 3, lecture number 11, and our today's topic is part 2, living things, life functions. First of all, I give the introduction of living things. Living things are those who can grow, can move, and reproduce, and they also need food, air, shelter, and water. Let's see. A living thing can move. Living thing हरकत कर सकते हैं. A living thing can grow. ये बढ़ते हैं. A living thing can change. A living thing can make more of its own kind reproduce. लिविंग थिंग क्या करते हैं? अब रिप्रोडक्शन का काम करते हैं. मीन्स अपनी ही किस्म के स्पीशीज़ को रिप्रोड्यूस करते हैं. आ लिविंग थिंग हैज़ नीड्स. लिविंग थिंग्स के लिए क्या ज़रूरी है? एयर, हवा, वाटर, पानी, फूड, खुराक एंड शेल्टर. पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट. लोग, जानवर और पौधे और लिविंग थिंग्स. ये क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं. You can see in this picture, living thing can move. Living thing can grow. And this picture shows the living thing can reproduce. Living things have cells. Human body is made up of billions of cells. You can see here, living things needs air. Living things needs nutrients, means food. They need water. You can see this. All of these are living things. In this diagram, you can see living things easily. The next one is life functions. The word life means zindagi and functions mean jobs, tasks. Particular functions. For living things, life functions are necessary because through these functions, when they perform, they will stay alive. The life functions are movement, growth, food, respiration, waste, sensitivity, and reproduction. I repeat these functions. Student, please listen very carefully. The life functions are movement, growth, food, respiration, waste, sensitivity, and reproduction. We will discuss these life functions one by one, but first of all, you learn these functions by heart. I repeat them. Life functions are movement, growth, food, respiration, waste, sensitivity, and reproduction. Please open to page number 22 of your book. You can see part 2, living things. Unit number 3, life functions. The recall of this unit is, our planet has billions of living things. हमारे planet पर billions living things हैं. On it, they can live on it. वो यहाँ पर ज़िंदा है. क्यों? Because it has water. क्योंकि यहाँ पे पानी है, मिनरल्स मादनियात हैं, लाइट रोशनी, एयर एंड वार्म.
You can also see this. Living things depend on each other. Living things जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. Like human being and plants, both are depend on each other. In the process of respiration, human inhale oxygen and exhale carbon dioxide. With the help of carbon dioxide, plants use this gas in the process of photosynthesis. Photosynthesis is the process through which plants make their own food. And the human use the food in their daily life. So, plants and human are dependent on each other. You will learn that, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, certain functions are common to all living things. कुछ जो फंक्शंस हैं वो तमाम लिविंग थिंग्स में कॉमन हैं. बट दे आर परफॉर्म्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज. लेकिन वो परफॉर्म किए जाते हैं कई किस्म के तरीक़ों से. लाइक वैरायटी ऑफ वेज. वैरायटी मीन किस, वेज मीन तरीके. ऑल लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, फीड, ब्रेथ, फील, reproduce and produce waste matter. तमाम लिविंग थिंग्स हरकत करते हैं, बढ़ते हैं. फीड मीन खुराक खाते हैं. ब्रेथ मीन सांस लेना. फील महसूस करना, एहसास. रिप्रोड्यूस पैदा करना. एंड प्रोड्यूस वेस्ट मैटर. मैटर मीन्स मवाद. वेस्ट मीन जिसकी बॉडी को आपकी ज़रूरत नहीं है, मीन्स इट इज़ वेस्ट. दे परफॉर्म दीज फंक्शन इन डिफरेंट वेज. वो ये फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट वेज में परफॉर्म करते हैं. आई स्टार्ट द रीडिंग. यू कैन सी हियर, देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ. अर्थ पर लिविंग थिंग्स की कई किस्में हैं. What does it mean to be alive? What characteristics do all organisms or living things have that make them different from non-living things? वो वहाँ पे किस तरह ज़िंदा हैं और उनमें कौन सी खूबियाँ हैं जो उन लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट शो करती हैं. Let us study these features in detail. चलें अब इसकी डिटेल हम पढ़ते हैं. There are something which all living things do. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तमाम living things करती हैं. These jobs or tasks are called functions. वो जॉब और वो काम क्या कहलाता है? फंक्शंस कहलाते हैं. Living things perform these functions to stay alive. Living things ये functions इसलिए perform करते हैं ताकि वो जिंदा रह सके. Not all animals perform these functions in the same way. तमाम जानवर ये काम एक ही तरीके में नहीं करते. Not all plants perform these functions in the same way. तमाम पौधे भी ये फंक्शन एक ही तरीके से परफॉर्म नहीं करते. ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम लिविंग थिंग्स परफॉर्म द फंक्शंस लिस्टेड बिलो. तमाम लिविंग थिंग्स ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसकी लिस्ट नीचे दी गई है. बट दे डू सो, वो ये करते हैं इन अ वैरायटी ऑफ वेज, वैरायटी ऑफ कई तरीक़ों से. ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम लिविंग थिंग्स मूव, हरकत करते हैं. ग्रो, बढ़ते हैं. नीड फूड, उन्हें खुराक की ज़रूरत होती है फॉर एनर्जी. कैरी आउट अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, ताकि वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कैरी आउट कर सके. Respiration is a process through which
वी ब्रेथ। रेस्पिरेशन वो अमल है जिसकी मदद से हम सांस लेते हैं। सांस लेने का अमल रेस्पिरेशन कहलाता है। प्रोड्यूस वेस्ट सब्सटेंसेस, ऐसे वेस्ट सब्सटेंसेस वो पैदा करते हैं। एंड रिप्रोड्यूस, और रिप्रोडक्शन करते हैं, मीन्स अपने जैसे जानदार को दोबारा पैदा करते हैं। मीन्स अपने जैसे जानदार पैदा करने का जो अमल है वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। I repeat this, all living things move, grow, need food, carry out a process called respiration, produce waste substances and reproduce. All living things have sensitivity. तमाम लिविंग थिंग्स में क्या है? सेंसिटिविटी मीन्स फीलिंग, सेंसेस। सेंसिटिविटी वर्ड मीन्स हसासियत। They use their senses to find out about their surroundings. They use their senses to find out about their surroundings. वो इन सेंसेस की मदद से अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसको तलाश करते हैं। With the help of sensitivity, we can feel what is going on our surroundings. Students, today's your diary is reading page number 22. Watch the video again and again. Still, Allah Hafiz. Thank you so much.